व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लिखते हैं, हिज हेलमेट बेयर्स portraits of our athletes who were killed by Russia. Figure skater Dmytro Sharper, who was killed in combat near Bakhmut. Yevhen Malasevin, a 90-year-old biathlete killed by the occupiers near Kharkiv, and the other Ukrainian athletes whose lives were taken by Russian war. I thank the flag bearer of our national team at the Winter Olympics. Боксер. Серед них तो विंटर ओलंपिक्स Vladislav तो बहुत सारे नाम है फॉर रिमाइंडिंग द वर्ल्ड ऑफ द प्राइस ऑफ आवर स्ट्रगल. दिस ट्रूथ कैन नॉट बी इनकन्वीनियंट इन appropriate or call the political demonstration as a sport event. तो बहुत सारे लिखा. तो यहाँ पर ये बंदे को देख सकते हो. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हेलमेट इन विच आई विल compete at the Olympic Games in just a few days. One of the helmet are depicted athletes who were killed during the war, or to be more precise, only a small fraction of them is unfair. तो देख सकते हो भाई, यही वो इंसान हैं जो अपने Сьогодні я хочу розказати про точний. अपने जो भी यूक्रेन में पता होगा आपको वॉर चल रहा है, तो ये उन लोगों की तस्वीरें एथलीट्स की है जो इस वॉर में उनकी डेथ हो चुकी है. और ये जो एथलीट हैं वो compete करेंगे ओलंपिक्स के लिए, तो ये हेलमेट पहन के करेंगे. ये अपने एक तरह से दोस्तों को बताएंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि क्या हो रहा है यूक्रेन में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके Серед दोस्त. них є призер юнацьких олімпійських ігор Максим Галінічев, боксер. Серед них, на жаль, дуже багато дітей, які загинули від російських обстрілів. Серед них люди, які розвивали ветеранський спорт. Я буду змагатися за них. I race for them. Для мене честь носити ці зображення і показувати світу, яку ціну Україна платить щоденно у цій кривавій війні. Пам'ятаємо наших героїв і пам'ятаємо тих, чиї життя забрала Росія. मार्क हेनरी अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा लिखते, आई एम devastated by today horrific shooting in Tumbler Ridge, BC. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to this horrific act of violence. I join Canadian I grieving with those whose lives have been changed irreversibly today, and in gratitude for the courage and selflessness of the first responder who risked their life to protect their fellow citizens. Our ability to come together. तो गाइस, इमैनुअल मैक्रोन लिखते हैं, द क्लाउन वांट्स टू मेक फ्रांस एन AI लीडर विथ 30 million euro to attract and support around 40 top-tier international researchers. They choose France for its value and its commitment to science. Sometimes it's too slow. 54 billion euro mobilized as early as 2022 to build France 2030, a France that advances health, climate, and fundamental science by investing boldly in artificial intelligence. In private investment announced at the Paris AI Summit by French and international companies to develop AI in France, that is, in 2025, France ranked first among the countries attracting foreign investment to build data center. More billions invested in our region and in our talents. Yes, here in France, we believe in science, and AI is here to elevate, to build, to move the world forward, not to insult. Hashtag for sure. गाइस, तो देख रहे हो भाई, ये यूथोपिया है. बताया जा रहा है कि इसकी इकॉनमी $125 बिलियन के और हमारे 4.5 ट्रिलियन इंडिया की 36 टाइम लार्जर दैन यूथोपिया.
बट हमारे रोड्स ऐसे नहीं हैं, हमारे सिटीज़ ऐसे नहीं हैं। तो इस पे क्या कहना है आपका, कमेंट करके बताना। Superpower, because if you look at the bigger picture, I mean, in terms of economic might, I mean, China is a very powerful country. What is actually the difference? When for example Russia goes to war, they go alone because they don't have allies. When America goes to wars, then a lot of us go with you, and we lose our people on the way. So. कनाडा में जो शूटिंग हुई है टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल शूटर, तो बताया जा रहा है कि 17 इयर्स ओल्ड जेसी स्ट्रैंग है। उनकी इमेजेस आप देख सकते हो, ये रही।